if you are preparing for CA Inter Group 1 and you have only 30 days and confused है कि पूरा syllabus कैसे cover होगा, then this video is for you. Here in this video, I'm going to give you structured 30 days plan wherein you can complete your 3 subjects along with revision and mock. So watch this video properly and trust me, आप exam देने confidently जाओगे. Remember one thing, CA Inter study is not about studying 12 hours in a day. It's about study right things in right order. I have divided this 30 days in 3 parts: 15 days, 9 days, and 6 days. So I'll explain you first 15 days what you need to do, then 9 days what you have to complete, and last 6 days which is very important and which is very much required to polish your whole 3 subjects. Okay, let's get started. First 15 days. In 15 days, again, I have divided this 15 days in 3 parts. 5, 5, 5. So, first 5 days, you need to give one subject. Whole time, you have to study one subject. Maybe it will be accounts, or it can be a law, or it can be your tax. That is your call. But 5 days, you have to concentrate more on your for one subject. क्यों एक सब्जेक्ट बोल रही हूँ? क्योंकि अगर आप एक साथ पूरा सब्जेक्ट पढ़ते हो, like if you are taking accounts, then you will find a good connection between the chapters and you will able to understand the concepts. और आप साथ साथ कौन सा हार्ड टॉपिक है और कौन सा इजी टॉपिक है, दोनों को क्लब करके प्रॉपरली चैप्टर्स को खत्म कर सकते हैं. तो फर्स्ट 5 days try to complete one subject, say accounts. Next 5 days again focus on one subject, say law, and आप डिपेंडिंग अपॉन योर स्वॉट एनालिसिस आप कौन से चैप्टर कितना टाइम में करना चाहते हो एंड कौन से कॉम्बिनेशंस लगा के करना चाहते हो, स्टडी सिग्नल लगा के करना चाहते हो, आप कंप्लीट करो. तो फर्स्ट 5 days अकाउंट्स, देन सेकेंड 5 days is going to be your law and third is your tax. So ऐसे आप 15 days तक प्रॉपरली एक साइकिल में पूरा का पूरा सब्जेक्ट को फुल फोकस के साथ कवर कर सकते हैं. Here you may face challenges like you are not able to complete few of the topics, or maybe you are not able to confident on some of few of the topics, or maybe you are like not able to practice sums of few of the topics. So basically कुछ challenges रहेंगे, but first 15 days में I can assure you if you give this 5-5-5 slot, then you are able to complete 80% of your proper syllabus and rest 20% will be again problem में रह सकता है. So but you not to worry for that. This 15 days is over. Next come your next 9 days. What you need to do in this next 9 days? So, next 9 days में क्या करना है? Again this 9 days I have divided into 3-3-3. So whatever you have studied in first 5 days in say accounts, then you need to cover the same revision type of thing in next 3 days. So आप इन 3 दिन में क्विक रिविजन कर सकते हो. साथ में अगर आपका कुछ छूट गया है, मे बी आपने प्रैक्टिस नहीं किया और मे बी आपका कुछ टॉपिक ही पूरा का पूरा छूट गया, आप उसको कवर कर सकते हो. आप अपने पास पेपर्स, आरटीपीज, एमटीपी के क्वेश्चन सॉल्व ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो, so that your whole syllabus will be covered now in 3 days. So again 3 days 100% devotion should be given to your one subject, that is accounts. Then next 3 days again you will jump on to another subject, say law. उसके ऊपर फुल फोकस लगाइए और आप अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है, कोई छूटे हुए टॉपिक्स को कवर करना है, आप उसको कवर करिए एंड देन यू विल बी डन विद लॉ आल्सो. देन comes your tax, again next 3 days slot wherein you will be able to complete your whole tax in 3 days. Now maybe it's a challenging, लेकिन आप उसको आराम से 3 दिन में
कंप्लीट कर सकते हैं बाय प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज टैक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड अकाउंट्स इज ऑल्सो ऑल अबाउट प्रैक्टिस. सो इससे क्या होगा कि आपका सेकेंड साइकिल भी इमीडिएटली होगा. बट आई कैन अश्योर यू कि जो 80% पहले कंप्लीट किया था, यहाँ पर थोड़ा एनर्जी लेवल थोड़ा हाई रखना पड़ेगा, और एट द सेम टाइम इस बार आप 85 to 90% कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हाँ, मुझे सिलेबस पूरा का पूरा कवर हुआ है. गॉट इट. बट वन इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू नोट इज, आपने जो फर्स्ट 15 डेज में सीक्वेंस रखा है 5-5-5 का, सेम सीक्वेंस शुड बी फॉलोड ओवर हियर. से पहले आपने अकाउंट्स, लॉ, टैक्स रखा था, तो यहाँ पर भी 3-3-3 डेज में भी अकाउंट्स, लॉ एंड टैक्स ही रहना चाहिए. इट शुड नॉट बी मिक्सचर ऑफ एनी अदर थिंग्स. गॉट इट. Now you have completed 2 slots, 15 days and 9 days. Third slot, which is very much important, is 6 days. मतलब आपका 30 days में 6 days आपका final slot है, जिसके अंदर आपको same thing you have to repeat, but now you need to give 2 days to each chapter subject. So that is 2 plus 2 plus 2. So how you can do is like 2 days full-fledgedly devoted to accounts, but this time you need not to open the same revision, same practice which you have already done in the last 2 cycles. So here you need to focus on PYQs or mocks. The more you solve the mocks, the more you become confident and your syllabus will be automatically covered. So आप दिन के 2 मॉक या 3 मॉक भी लिख सकते हो, और उसको एनालाइज करके अपने कोई वीकनेसेस को आप उसको फोकस कर सकते हो. सो same 2 days full-fledgedly you can easily write 3-4-5 mocks. It is all about your caliber and your energy level. Then comes your second day, second cycle, not second cycle, basically next subject, that is 2 days you have to full-fledgedly give it to law. Again, this is your choice. You can write 2 mock, 3 mock. I will suggest to write you mock, but you, at the same time, in the rest of the period, जो mock लिखने के बाद समय बचता है, तो आप अपने hard chapter को perfect कर सकते हैं, revise करके. Then third subject, which is tax. Again, the more you write mock, the more confident you become. So I will suggest write 4 to 5 mocks of it. अगर 4 भी नहीं हो रहा तो no problem, at least 3 लिखो and then practice the जो बचे हुए टाइम में आप अपने चैप्टर्स को परफेक्ट करो. सो यू कैन सी दैट 3 अलग अलग साइकिल में, 15 डेज के साइकिल में, 9 डेज के साइकिल में, 6 डेज के साइकिल में, आप अपने सब्जेक्ट को इतने बड़े हैं 15 डेज को कम कर रहे हो, 9 डेज में ला रहे हो, और कम कर रहे हो, 6 डेज में ला रहे हो, एंड फाइनली एग्जाम के एक दिन पहले आप पूरा सब्जेक्ट अच्छे से रिवाइज करके चले जाओगे. So this is the most important thing. In this way, if you will do it, I can assure you आप exam hall में confidently जाओगे. If you feel this video is very useful, then do subscribe me for more such type of video. और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपके कोई फ्रेंड को बहुत ज्यादा जरूरत है जो आज अभी तक procrastinate कर रहा है, तो do share this video with your friends. And again, if you really want a customized plan for you yourself, then do text me, do give a comment on our video. We will definitely going to contact you. Thank you very much. Bye-bye.